Right, in just hours from now, Nandigram will go to polls in what is seemingly a tectonic election of West Bengal, something that we saw the run-up to in the course of many, many months. The focus now West Bengal, the second phase of polling. Nandigram will go to polls in the second phase, sealing the fate of incumbent Chief Minister Mamata Banerjee and her challenger Suvendu Adhikari, once confidant and lieutenant. 22 additional companies of the Central Forces will be deployed in the district ahead of polls during 2016 Nandigram Assembly elections. Then TMC candidate Suvendu Adhikari had won 67% of votes, while the BJP came third after left, as it had won just 5% votes. Well, a lot going on. In that 67% votes, the TMC now says, viewers, a lot of that percentage was also the minority vote. Will it go to the BJP is the big question that the TMC also asks internally as that as well. I want to cut across right now to my colleague, Polumi Saha, who's getting us the heat, dust and the politicking of this phase 2 of elections, reporting from Nandigram. Over to you, Polumi. Right, Preeti. In fact, a day before Nandigram goes to polls, Chief Minister Mamata Banerjee has revealed her gotra. After Chandi Path and temple visits, Mamata Banerjee said that her gotra is Shandilya. The BJP, of course, is claiming that this is a desperate act by the incumbent Chief Minister, fearing defeat. Here's a report. ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পূজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। আমার পূজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পূজোটাই আমি দিই। Mamata Banerjee ending her Nandigram campaign by playing the Gotra cards, declaring that she is a Shandilya. As the curtains fell on the final leg of a bruising battle in her Karm Bhumi, where she is pitted in a high-octane battle against her former confidant Suvendu Adhikari, Mamata triggered a fresh flashpoint by this Gotra sign-off. আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। From Ma Mati Manush all the way to explicitly declaring her lineage in Hindu culture, what compelled this unusual move from Didi? First off, the answer may lie in some of the reactions that have already come in. First, from AIMIM chief Asaduddin Owaisi. She's practicing same politics of communalism which is being practiced by Narendra Modi and BJP. I don't find any difference between what she's saying in this election and in her own election campaign and what BJP is doing. So Mamata Banerjee and Narendra Modi are made for each other. Owaisi's barb likens Mamata to Rahul Gandhi, who famously had his team declare that he is a Janayudhari Hindu back in 2017. But Didi is also under attack from her primary challenger. मोदी जी के डर से आपने गोत्र तो बता दिया, लेकिन आज तक आपने सांडिल गोत्र वालों को इतना तंग और तबाह क्यों किया? जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई तब उनको समझ में। Mamata's Gotra declaration is the soaring climax to a steady script she's been playing to on the political battlefield to counter the BJP's Hindu nationalist politics. It began with her declaration of being a Durga Bhakt. राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था। हम दुर्गा पूजा करते हैं। Then she chanted mantras from the Nandigram stage. Then she went on a non-stop temple hop. Then she declared her Hinduism once again explicitly. I am also Hindu. I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B or I am Hindu C or I am Hindu D or I am Hindu Z. I am Hindu, I am also Hindu. Then she stood up from her wheelchair for the national anthem. And now finally the declaration of her Gotra.
আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। The battlefield is set. All weapons have been fired. Nandigram goes to the vote on Thursday. But Mamata's message will also be for the 6 phases that follow. With Polami Saha in Nandigram, Bureau Report, India Today. Just a few hours from now, Nandigram is going to go to polls, but we're going to shift focus right now to the state of Assam. Assam is also going to polls, viewers, and the big draw in terms of political plank is the NRC factor. Which way will it go? For more, over to my colleague Tanushree Pandey. Thank you, Preeti. The Bharatiya Janata Party is promising a corrected NRC to the people of Assam. This comes after lakhs of Hindu Bengalis were excluded from the initial list released in 2019. But when the people of Assam give BJP another chance with the NRC, I filed this special ground report to understand the reality. Take a look. The National Register of Citizens was prepared on the orders of the Supreme Court and made public in August 2019. The NRC, intended to identify illegal immigrants, was a demand of the Assamese for many decades. But the final register declared more than 19 lakh people, including thousands of Hindus, illegals, an outcome that left no one happy. 18 months later, the BJP has promised a corrected NRC to the voters in Assam. असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम असम का रहे। India Today went to Hojai and Nagaon districts of Assam, where hundreds are left out of the NRC to sense the mood among the voters. Sunil Barman's family was excluded from the list released in 2019. They are now living in fear. না মাছে না কিভাবে মানবো, আমাকে ঠকিয়েছে বারবার ঠকিয়েছে, কিভাবে মানবো? এখন নতুন কি জানবো? আজকে দেখেন নাম নাই, আমাদের ঘরে 4 জনের নাম নাই, আমার পরিবারের 3 জনের নাম নাই। ভোট ব্যাংকের জন্য কিসের জন্য চিটিং বাজিটা হচ্ছে? এটা আমার মনে হচ্ছে তারা সরকার আরেকবার যেটা সরকার এখন আছে তারাই বসতে যাচ্ছে গদিতে, এটাই মনে হচ্ছে। যেটা এখন সরকার আছে, বিজেপি সরকার আছে, তারাই এখন এই এনআরসি বলে তারাই বসবে আবার গদিতে, এটাই মনে হচ্ছে। এনআরসিটাকে খালি ইউজ করছে ওরা, ইউজ করে তারা আবার সেই মন্ত্রী পদে বসবে। It's not just Bengali Hindus who feel betrayed. Many Assamese tribals also found themselves excluded from the list. भरोसा करके भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 2 बार इतने फुल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी नहीं आया, इस बार भी कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा डर भी लग रही है, अब पिछली बार जो होगा एनआरसी उस पर भी आएगा कि नहीं आएगा, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते। Even in despair, many are hopeful of making it to the register later. এটা যেটা রি-এনআরসিটা যেটা করবে বলছে, যেটা ভুল হয়েছে এটা শুধরাবে বলছে, এটা করলে তো ভালো। এখন তো মনে হচ্ছে করবে, তো মনে তো এখন 50% 60% হয়ে আছে। আর কোন সরকারের ভরসা নেই, আর কোন সরকারের কোনো ভরসা নেই। কংগ্রেস আসলেও যে করবে এটা তো কোনোদিনও না। তারপরে এআইডিএফ ওরা তো কোনোদিনও করবে না, যদিও করে একমাত্র বিজেপির উপরেই ভরসা আছে, মানে 50% 60%। The Bharatiya Janata Party has promised a corrected NRC voted to power, but for those living under the fear of being sent to detention centers, it's a promise they are not quite ready to buy. They claim they have all the valid documents and it's the government which has failed them. Now, could these 19 lakh people damage the BJP's prospects? The Saffron Party can't say. It's not worried. With camera person Pradeep Gupta in Guwahati, Assam, I'm Tanushree Pandey for India Today.
Dynasty and politics is a debate that rages practically every election. This time, it's rife in the state of Tamil Nadu. After the Prime Minister attacked Stalin's son, Udayanidhi Stalin, for carrying on with dynastic politics, the son, Stalin's son, Udayanidhi, has now reacted. The young crown prince of DMK, who is sidelined many senior DMK leaders, he too made horrible remarks. This attack on the DMK's dynasty issue couldn't have come from a higher level. The Prime Minister himself singling out the Stalin family and labeling Udayanidhi Stalin as a crown prince. The attack from Tamil Nadu's Dharapuram was an echo of a barb the Prime Minister has used before, if you remember, for another dynast. अगर ये ताकतवर मंत्री दिल्ली में बैठे हैं और शहजादे जी उनके खास यार दोस्त हैं। Udayanidhi has been facing dynast barbs for weeks now since he was named the DMK's candidate from Chennai's Chepauk Triplicane constituency. But a withering blow from the Prime Minister just couldn't be ignored. பாஜகல அத்வானின்னு ஒருத்தர் இருந்தாருமா. இந்தியா முழுக்க அவர்தான் ரத யாத்திரைலாம் போனாரு. அடுத்த பிரதமரா அவர்தான் வர போறாருன்னு சொன்னாங்க. இப்ப அத்வானி எங்க இருக்காருன்னு யாருக்கு தெரியும்? யாருக்கும் தெரியாது. ஓரம் கட்டிட்டாரு. யஷ்வந்த் சின்ஹான்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. மோடியோட டார்ச்சர் தாங்காம வெங்கையா நாயுடுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமாமா? அவர்தான் அடுத்த பிரதமர்னாங்க. அவரையும் ஓரம் கட்டியாச்சு. And then, appearing to embrace his dynast status, Udayanidhi fired another salvo, reviving one of his most enduring face-offs this election with the sitting Chief Minister of Tamil Nadu. நான் வந்து எடப்பாடி ஆச்சு எடுபடி ஆச்சு எடப்பாடி கிடையாது எடுபடின்னு சொல்லுங்க எடுபடியா மோடியோட எடுபடி ஒண்ணு கீழ இருந்து. If the 2014 election results are any indicator, the Prime Minister's Shahzada label for Rahul Gandhi had a devastating effect on the Congress leadership and its public image. The so-called Crown Prince of the DMK has had to rub shoulders with the so-called Shahzada of the Congress. As the DMK and the Congress tided over their seat-sharing troubles, Rahul's Congress has undoubtedly been cut to size. All right, let's shift focus now to the state of Kerala after the Prime Minister invoked Judas while saying that the left in the state of Kerala sold the people for just a few pieces of gold. The Kerala Chief Minister, Pinarayi Vijayan, in an exclusive interview to India Today, hit back at the Prime Minister. Vijayan alleged that the gold scam is politically motivated and the conspiracy against the state government will soon be revealed. Vijayan's remarks come after Modi at a rally in Palakkad said that the LDF government has betrayed the people of Kerala for 2 pieces of gold, the way Judas betrayed Jesus Christ for a few pieces of silver. Vijayan further added that his government's record on corruption is clean. The case has been raked up due to the elections. UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF, it can be said, Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. The allegations or the nature of the allegations, people in your own office being arrested in the gold smuggling case, does that not embarrass you? ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി എടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണത്. രാഷ്ട്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള വേളയിലാണ് പുറത്തു വരിക. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ അറസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ്? അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ആദ്യം ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്താൻ വന്നത് NIA ആണ്. NIA എല്ലാ വിശദമായ പരിശോധനയും നടത്തി അതിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തു. എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആൾക്ക്
പറ്റിയൊരു അബദ്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം. ആ സൗഹൃദം എത്രത്തോളം പോയി എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കുറ്റം, ഒരു ജോലി കൊടുത്തത് സാധാരണ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചല്ല. അതിൻ്റെ മേലെ നടപടിയെടുത്തു. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.